Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the third module of the topic simplification, and in this model we are going to cover some moderate level questions, some exam level questions of the topic simplification. So अगर आप कोई भी competitive exam के लिए prepare कर रहे हो, then this module, this channel, these videos are for you. So let's start with the topic. Wait. Okay, so this is the third module of the topic simplification, and in this module we are going to cover some moderate exam level questions. So let's start with the topic. First question. Here you can see everywhere there is divisibility का sign, division का sign है, एक ही है operation. So what we will do is ये division को we will convert this into multiplication and next term का करेंगे reciprocal. So 5 by 3 will become 3 by 5. 1 by 4 को will write 4 by 1. 9 by 4, 4 by 9. 1 by 3 we will write as 3 by 1 and 27 by 5 we will write as 5 by 27. Okay, now इतना तो हमें पता ही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले जो भी चीज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करें. सो 5 5 कैंसिल, 9 को कैंसिल करेंगे ये 2 3 के साथ, बच गया. और एंड में क्या बच गया? 2 into 4 into 4 दैट इज इक्वल टू 32. सो इट इज 32 by 20, नहीं 32 by 27 into 5. Okay, 27 into 5. So that is equal to 135. So this is the answer, 32 by 135. Next, 16% of 800 is equal to 3 by 7 into what? Now 16.5% of 1800. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? Can we write like this? This is nothing but 16.5 into 18 is equal to 3 by 7 into x. ठीक है, so 16.5% of 1800. So 16.5 into 18. So basically this is nothing but 165 into 18 करना है. करेक्ट. ना 165 into 18 कैसे करोगे? अगर हमें वो ये करना है 165 into 18. So how we will do is the best way is this, कि हम ऐसे कुछ कर देते हैं, इसका डबल कर देते हैं. तो 165 का जो है डबल हो जाता है 330 into 9. This is how we can do. So 330 into 9. So 722970. So this is nothing but 297. 16.5 into 18 is equal to 297. That is equal to 3 by 7 into x. Perfect. So this is x is equal to 297 into 7 divided by 3. ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? So this is 9 and 99 into 7. करेक्ट. सो 99 into 7. 99 into 7 एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा मेथड ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो. 11 into 9 into 7. 99 को हमने लिख दिया 11 into 9. So that is nothing but 11 into 63. That is equal to 639. So x is equal to 693. This is the answer. ठीक है. Next. Now क्या लिखा है यहाँ पर? 15.95 का फोर्थ रूट. Now, what does this mean? 15.95 का fourth root means, can we write this as like 16 का fourth root? And we all know that कि 2 raised to 4 is equal to 16. It means कि 16 का fourth root is 2. So this value is 2. ठीक है. So 2 plus 3.01 का cube, that can be written as 3 का cube. Approximation का एक question है, so we have to write the approximate value. 111.99 can be written as 112. Into 2.02 can be written as 2 and 9.98 can be written as 10 का square. This equals to question mark. So क्या होती है इसकी वैल्यू देख लेते हैं. 2 का क्यूब is 27 minus 224 plus 10 का square is 100. ठीक है, ये निकालना है. 2 plus 27 29. So this is nothing but 129 minus 224, that is equal to minus 95. Option B is the correct answer. So ये approximation का question था. Next, 312.07. डेफिनेटली इसको हम लिखेंगे 312 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है तो मान लेते हैं x से डिवाइड करना है, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस
12.99 का square is nothing but 13 का square, which is equal to 169, and this is equal to, now ये क्या लिखा है, तो आप देख सकते हो ये लिखा है 20% of 909 can be written as 910. परसेंटेज को 2 0 से काट दो, so basically this is 2 into 91. 2 into 91 is 182. So 312 upon x is equal to 182 minus 169. 12 minus 9 is 3 and 17 minus 16 is 1. So this is 13. So x is equal to 312 divided by 13. Divide करोगे तो क्या आ जाएगा 2 and 52 यानी कि 4. So x is equal to 24 is the answer. Next question. Dash का क्यूब, मान लेते ये x लिखा है, so x का क्यूब minus 49 into 2. 49 into 2 is 98 is equal to 13% of 200. Once again, percentage को 2 0 से काट दो, so 13 2s are 26 and plus 23 into 4. 23 into 4 is nothing but 46 का double. 46 का double is 92. So from this I can say कि x is equal to 26 plus 92 plus 98. 92 plus 98 कितना हो जाएगा 190. This value is 190 and 190 plus 26, that is nothing but 216. So x cube is equal to 216. So x is nothing but 6. क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216. So answer is 6. Next question. 242% of 54 plus 92% of 121. Okay. So how we will solve this question? ओके इसमें आप देखोगे तो एक पैटर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पर इट इज 242 एंड हियर इट इज 121. नाउ ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि x% ऑफ y इज ऑल्सो इक्वल टू y% ऑफ x. इट मीन्स कि 92% of 121 can also be written as 121% of 92. This can be written as 122% of this. Okay. %92 of 121 can be written as 121% of 92. So basically we can do is 242% of 54 plus 92% of 121 we will write as 121% of 92. Now once again अभी तक पूरी चीजें ठीक नहीं हुई है. ये 242 है, ये 121 है, तो अगर इसको हम डबल कर रहे हैं 121 को we can write as 242%. तो इसका डबल किया तो इसका हाफ करना पड़ेगा. So 92 can be written as 46. So this is nothing but 242% of 54 plus 242% of 46. In short, it is 242% of 54 plus 46, that is equal to 100. 242% of 100, once again this can be written as 100% of 242. 100% of 242 is 242 only. So answer is 242. Next, 215.97 का cube root into 121. Now this is 120, but 120 is not a perfect square, so we will convert this into 121. एक nearest perfect square में लेके जाएंगे. Minus x is equal to 34.02 को लिख देते हैं 34% of 150. Perfect. So 216 का cube root is nothing but 6. 121 का square root is 11 minus x is equal to, now 34% of 150 can be written as 150% of 34. 150% यानी कि 100% plus 50%. 100% of 34 is 34 and 50% of 34 is 17. So this is equal to 51. So x is equal to 66 minus 51, that's equal to 15. Option B is the correct answer. Next, 92% of 225. Once again, 92% of 225 can be written as 225% of 92. Plus 64 into 1 by 16 is nothing but 64 upon 16 plus 66.67% आपको पता होना चाहिए. This is nothing but 2 by 3 percentage to fraction. This value we need to find out. Now 225% of 92. Can we say this is nothing but 200% plus 25%? 200% of 92 means 92 का double.
एंड 25% ऑफ 92 यानी कि 1/4 ऑफ 92 प्लस 64/16 is 4 and this value is 14. Now 92 into 2 is 184. 92 का 1/4, 92 का half. Now 1/4 कैसे करना है, हर चीज मेंटली करनी है. So 1/4 we can do it like half करके half. So दो बार अगर आप half करोगे, so that is equivalent to 1/4. So 92 का half 46, 46 का half 23 plus 18. This has to be our answer. ठीक है. So this is nothing but 184, 23, 33, 43, 41. 225 is the answer. Next, 28% of 250 minus 85% of 450. Okay. Now percentage को हमने एक जीरो से काटा, एक जीरो अभी भी रह गया. So we can write like this: 28 into 25 by 10 minus percentage को एक जीरो से काटा, एक जीरो अभी भी रह गया. So upon 10. This is 5. 5 से डिवाइड करेंगे, इसको इसका हाफ करेंगे 14. So 14 into 5 is 70 minus इसको 5 से डिवाइड करेंगे 17, इसका हाफ करेंगे 24. So minus 17 into 24 is equal to 75x minus 38. So from this we can say कि 75x is equal to 70 plus 38 minus 17 into 24. 17 into 24 क्या होता है? 17 4 जा 68 and 17 2 जा 34. 34 में 6 ऐड करोगे तो 408. Okay, ji. Now 70 plus 38 is nothing but 108. So 108 minus 408, that is equal to minus 300. So from this I can say कि x is equal to minus 300 divided by 75. 75 4s are 300. So answer is minus 4. So x is equal to minus 4. नहीं, minus 300 नहीं होगा क्योंकि 75 से डिवाइड भी तो करना है. तो x is equal to minus 4 is the correct answer. Next. 75% of 640. Now 75% can be written as 3 by 4. ये 3 by 4 में इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि 640 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है. So into 640 minus, sorry, divide है, divide 24 plus 4% of 225, इसको ऐसे लिख देते हैं, is equal to, इसकी वैल्यू निकालनी है. So let us assume this value as x. 20% of 20% को 2 जीरो से काट दिया. So that is equal to 4. So 480 divide by 24 plus इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1, 4 से डिवाइड करेंगे 25. 225 by 25 is 9. That is equal to x square plus 4. This value is 20. So 20 plus 9 is equal to x square plus 4. So from this I can say कि x square is equal to 25. So x is equal to 5. So correct answer is 5. Option E is the correct answer. Next. Once again, this is an approximation ka question. 324.995, we will write this as 325 into 15.98, we will write as 16. 4.002 can be written as 4 and 36.88 can be written as 37. अभी देखिए into है, division है, plus है. First thing we will do is division. So 325 into 4 plus 37. So answer is 1337. Option B is the correct answer. Next. 32.01. This is nothing but 32 into 4.99 is 5 plus x. Suppose this value is x. This is equal to 64% of 350. Correct. 32 into 5 is 160. So 160 plus x. 5 से डिवाइड करेंगे 7, इसका हाफ करेंगे 32. So this is 32 into 7. 32 into 7 is 4 and 224. So x is equal to 224 minus 160. 24 plus 40 is equal to 64. So answer is 64. Next question. X into 9 square, that is equal to 81, is equal to 12 का क्यूब पता होना चाहिए. 12 का क्यूब होता है 1728 minus
35% ऑफ 1800, परसेंटेज को 2 जीरो से काट दो, सो दिस इज 35 इंटू 18 माइनस परसेंटेज को 2 जीरो से काट दो, सो 8 इंटू 36. So 81x is equal to 1728 माइनस, नाउ 35 इंटू 18 का क्या करोगे? क्या कर देंगे इसका 35 इंटू 18, देखिए करने का वंस अगेन मेथड है. 35 का डबल कर दो 70, 18 का हाफ कर दो 9. कोई भी नंबर अगर 5 से एंड कर रहा है और दूसरा नंबर इवन है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है मल्टीप्लीकेशन का. दिस वैल्यू इज 630 एंड 8 इंटू 36 इज 8. 4 कैरी फॉरवर्ड 288. ठीक है, चलिए ये पूरा एक साथ में ही माइनस करेंगे. 8 माइनस 0 माइनस 8 इज 0. 2 प्लस 3 सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 8. ये इसको 2 का 12 बना देते हैं, कैरी फॉरवर्ड करेंगे. 12 माइनस 3 इज 9. 9 माइनस 8 इज 1. नेक्स्ट इज 6 माइनस 2 तो नहीं होगा तो 16 कर देते. तो 16 माइनस 6 इज 10. 10 माइनस 2 इज 8. 810. 81x is equal to 810. So x is equal to 10. Next, 200 का स्क्वायर divide by 15.99. So that is divide by 16 minus root x is equal to 4 root x. x की वैल्यू निकालनी है. ओके जी, इसको 8 से डिवाइड करेंगे 2, इसको 8 से डिवाइड करेंगे 25 and this is 100. So this is 2500 minus root x को यहाँ भेज देते हैं. So that is equal to 5 root x. So from this I can say कि root x is equal to 2500 divided by 5, that is equal to 500. So root x की value is 500. If we'll do square on both the side, then x is equal to 500 का square. 500 का square क्या होगा? 25. ये 2 0 का 4 0 हो जाएगा. So this is the answer. Option C is the correct answer. So with this, we are through with the today's lecture. In the next session, once again, we'll solve such type of questions only. So we'll solve some moderate level questions. Simplification is a very, very important topic क्योंकि इसी topic से आपकी calculation improve होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो की वजह से आपकी क्वांट की जर्नी में, आपकी मैथ्स की जर्नी में थोड़ा हेल्प हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, and keep on practicing math because math is easy. Thank you.